Good morning, students. Today I am going to explain about the next gas law named as Gay-Lussac law, also named as Amanton's law. This law shows variation of pressure and temperature, keeping the volume constant. So, this law is similar to the law in which we studied about volume and temperature at constant pressure. Keeping pressure constant, we will study about, or we have discussed already about, variation of volume and temperature under the law named as Charles law. Now we will study about pressure and temperature keeping the volume constant. In this case, volume remains constant. The pressure of given mass of a gas may increase or may decrease by the value 1/273 of its pressure. जो pressure होगा उसकी with respect value 1/273 से increase हो सकती है और it may decrease at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or the fall in temperature. जितना हम टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेशर और जो टोटल प्रेशर है इसका रिजल्टिंग प्रेशर जो टेम्परेचर के बाद रिजल्टिंग आएगा उस केस में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा बाय दिस फैक्टर. Therefore, mathematically it can be expressed as Pt is equal to Po. Po means pressure at 0 degree Celsius. Pt stands for pressure at T degree Celsius at any temperature into 1 plus T by 273. Now it becomes equal to P naught 273 plus T divided by 273. Now it becomes equal to Pt is equal to P naught into T divided by 273. This 273 plus T, it can be written equivalent to T. Now in this case, this P naught and 273 are constant. Therefore, this Pt is proportional to temperature T, or on simplifying, this pressure is proportional to temperature when the volume remains constant. Therefore, when this proportionality sign is removed, equation becomes P is equal to K multiply T. This K is called as proportionality constant. Now, if this temperature is taken to left side, equation becomes P by T is equal to K. Suppose we have two different gases. One gas has pressure P1, other has pressure P2, वो temperature T1, temperature T2. Therefore, the equation becomes P1 divided by T1 is equal to P2 divided by T2. By knowing the three variables, we can find out the unknown fourth variable. So, when the graph is plotted between this pressure and temperature, it comes out to be straight line, indicating that these two factors are directly proportional to each other. And when the volume remains constant, suppose this is the first graph at volume V1, this is the second slope, this is a third and fourth. These slopes are obtained with respect to different volume V1, V2, V3 and V4. For every pressure and temperature, suppose this is the first slope in which volume V1 remains constant, this is second volume V2 constant, volume V3 constant and volume V4 constant. Now, when we extrapolate these, they seems to meet at this pressure point at this origin when pressure and temperature are minimum. In this case, volume V1 is less than volume V2, volume V3 and last is volume V4. So V4 की जो वैल्यू होगी वॉल्यूम की, that is maximum as compared to rest of the volumes. And this apparatus used for measurement of temperature and pressure is like this. In this case, gas or air is filled. Here, this apparatus consists of temperature jacket which shows variations of temperature, and here is pressure gauge. We can increase or decrease the pressure with this pressure gauge, and we can increase or decrease the temperature of this thermometer by using this temperature jacket. जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है उस एक ही फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट. सो सच टाइप ऑफ प्लॉट्स, these are named as isochore. These are named as isochore. Isochore means in which volume remains same. Now next law is Avogadro's law. This is the next gas law. It is named as Avogadro's law. What does this law state? This law states that equal volume of all the gases, equal volume of all the gases under the same conditions of temperature and pressure, under the same conditions of temperature and pressure,
equal volume of all the gases contain equal नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मीन्स जितने भी जो भी हमारे पास गैस प्रेजेंट होगी अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी कैसे आएंगे सेम अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी गैस है, सपोज 1 मोल ऑफ ए गैस, इसमें हमें मोलिक्यूल्स निकालने हैं। अब मोल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 1 मोल ऑफ एनी गैस और 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज़ ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस, इसमें कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स नाउ वी आर ड्राइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिक्यूल्स, देयरफॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 6.02 टू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो जो कोई भी गैस हो हमारे पास उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। नाउ हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट डिफरेंट कंडीशन। Now, the molar volume of gas at different condition can be measured in two forms. First is called as STP condition. STP stands for standard temperature pressure, and second is named as SATP. SATP stands for standard ambient temperature and pressure conditions. So, first of all, we will discuss about standard temperature and pressure. In this case, the temperature is 0 degree Celsius or 273.15 Kelvin temperature is taken. This temperature is also known as freezing point of water, and the pressure is taken as 1 atmosphere which is equal to 760 mm of Hg. क्लियर है। अब यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना लिया हमने 1 एटमोसफेयर प्रेशर। सो अंडर दीज टू कंडीशंस, अब हमारे पास कंडीशंस आ गई टेम्परेचर और प्रेशर की, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस। इन दिस केस 1 mole of the gas occupy 22.4 liter of the volume. So under a standard temperature and pressure conditions, 1 mole of a gas occupies 22.4 liter of volume. Now if the standard conditions are 0 degree Celsius, अगर हमने यहाँ पर conditions change कर दी है, सपोज स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना पुट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, सेम मीन्स 273.15 Kelvin, बट इफ द प्रेशर टेकन हेयर इज़ 1 bar, अगर प्रेशर कितना लिया है 1 बार, एंड वी नो दैट 1 बार प्रेशर इज़ लेस एज कम्पेयर टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इससे लेस है इसकी वैल्यू, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.987 एटमोसफेयर, और 1 एटमोसफेयर के अंदर वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये इससे लेस आ रहा है, इसमें कंप्लीट 1 है, यहाँ पर कितनी है 0.987, तो प्रेशर अब की बार क्या हो चुका है लेस, प्रेशर लेस है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजेज। सो इन अंडर दिस कंडीशंस the volume occupied by gas was found to be 22.7 liter per mole. क्लियर है। वॉल्यूम ज़्यादा क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि 24.7 है ये, ठीक है, इट इज़ 24.7, एक सेकेंड, इट इज़ 22.7, वाई इट इज़ 22.7। अब वॉल्यूम यहाँ पर 22.4 से 7 इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि प्रेशर हमने यहाँ पर किस कंडीशन में लिया है, बार में, एंड 1 बार इज़ लेस देन एटमोसफियर, यहाँ पर हमने यूज़ किया था 1 एटमोसफियर, तो प्रेशर लेस होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। थर्ड है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन दिस केस सपोज टेम्परेचर टेकन इज 298.15 Kelvin, स्टैंडर्ड मीन्स नाउ टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर 25 प्लस 273.15, इट कम्स आउट टू बी 298.15, एंड प्रेशर इज 1 बार, प्रेशर हमने कितना लिया है 1 बार, दिस प्रेशर इज़ 1 बार इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स, इसके इक्वल आएगा ये, विच इज़ द एटमोसफेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एंड दिस इज़ द एटमोसफेरिक प्रेशर मेजर्ड एट द सी लेवल. Now in this case the volume occupied by gas was found to be 24.789 लीटर. अब की बार वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, वॉल्यूम फर्दर इंक्रीजेस, तो मोलर वॉल्यूम जो हमारे पास गैस का आएगा वो कितना हो जाएगा 24.789 liter. In this way we can also express the relationship between Avogadro's law, which states that equal volume of all the gases contains equal number of moles under the similar conditions of temperature and pressure. Now V is equal to K into N. This K is called as constant of proportionality. Now we know that N is the number of moles of the gases. It can be written as mass divided by molar mass. Therefore V becomes equal to K into M divided by capital M. This M stands for mass of the gas. This capital M stands for molar mass of the gas. Now
Taking this volume to right side and molar mass to left side, equation becomes m is equal to k into m divided by v. M by v is called as density, therefore m is equal to k into d. Clear? Now when this k is removed, it is observed that mass is proportional to density. It means density of a gas is directly proportional to the molar mass. जितनी density ज़्यादा होगी, it means गैस का मोलर मास भी क्या होगा, ज़्यादा. क्लियर है पॉइंट. इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर.